I guess we should start the meeting now. Okay. हाँ अब करते हैं. So good evening everyone. लास्ट मीटिंग में हमारा कुछ इंटर्न्स का रह गया था प्रेजेंटेशन वाला, सो वहीं से स्टार्ट करते हैं. ओके. ओके. दीपशिका, हाँ बोलो. so you can start with the presentation. Okay. Good good evening everyone. I If Dipshika as an you intern. can flip the phone, that will be better for us. Okay, okay. Yeah. Okay, continue. Okay. Good evening everyone. I Dipshika as an intern in Tarumitra. Welcome you all to this Zoom session conducted by Tarumitra Ashram. So you can see in the first slide there is logo of Tarumitra. It means that a child is hugging a tree which shows the affection toward the tree. And the main motto of Tarumitra is Friends of Trees. Next. So, who we are? Tarumitra Ashram is an non-government organization working for the betterment and protection of the environment. Tarumitra also inviting interested volunteers to play an active role in the conservation of the environment. Next. Tarumitra's basic motto is to foster ecological sensitivity, and also Tarumitra teaches its member with skills to deal with the environmental problems. Next. Tarumitra Ashram is a bio reserve which is situated in the middle of the city. Does anyone know about bios reserve? No. Okay, let me explain. Bioreserve are the bioreserve are a protected area where we are conserve plants and animals. Next. This is the inner view of Tarumitra. Tarumitra Ashram has 10-acre patch of land, and they have 450 different kinds of species of trees and plants, and more than 35 species of birds, and few species of spiders, and 12 species of garden lizard. Next. He is the father Robert Ethical, who founded the Tarumitra with the group of school students. Next. Tarumitra was inaugurated in 2000 by the students. Next. The United Nations has conferred a special consultative status on Tarumitra, which means हम यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट. This is the picture of Uttarayan, the administrative building. ये कैंपस के नॉर्थ एरिया में है, इसलिए इसका नाम उत्तरायण है. Next. This is the inside view of Uttarayan.
इस बिल्डिंग को बनाने वक्त 4 इंच का गैप दिया गया था बिटवीन द ब्रिक्स, which tends to minimize the temperature in summer by 6 to 9 degrees. Next. All we can see, the tiles of floor has different sizes and shapes because they are recycled floor. Next. Tarumitra self-produced 4.5 kilowatt of electricity by the help of solar panels. Next. Tarumitra also recycle the wastewater which comes from the taps, washroom, etc. Next. This is plantation drive activity which is done by the interns of Tarumitra. 2024 में सिन्हा लाइब्रेरी के 100 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके प्रिपरेशन के लिए हमारे इंटर्न्स ने 35 कचना ट्री प्लांट किए थे। नेक्स्ट। On the occasion of Environment Day on 5th June, तरुमित्रा आश्रम के तरफ से 2500 पेपर बैग डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे दीघा मार्केट के लोकल शॉप्स में। नेक्स्ट। कुछ इंटर्न्स अपने घर के लोकल एरिया शॉप्स में भी पेपर बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे जो कि उस दिन नहीं आ पाए थे इसलिए। राखी सेलिब्रेशन। ऑल वी कैन सी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी राखी के फेस्टिवल के दिन पाटली ट्री को राखी बांध रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट हमारे तरुमित्रा आश्रम से आया है जिसमें हम लोग राखी के ओकेजन के दिन ट्री को राखी बांधते हैं। नेक्स्ट। तरुमित्रा के तरफ से गंगा क्लीनअप ड्राइव ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि सरस्वती पूजा के बाद हुआ था। इसमें हमारे तरुमित्रा के इंटर्न सारे वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और उसको प्रॉपरली डिस्पोज किए थे। नेक्स्ट। तरुमित्रा में ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है और इसे एक फेस्टिवल की तरह तरुमित्रा में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें स्टूडेंट ने प्लांटेशन एंड हार्वेस्टिंग किया था। यह एक्टिविटी टोटल 1 वीक तक हुआ था। नेक्स्ट। तरुमित्रा के तरफ से बहुत से स्कूल के बच्चों के साथ क्लॉथ बैग पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था और नेक्स्ट डे उन लोगों को सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। नेक्स्ट। थैंक यू। थैंक यू दीपशिका। एक्चुअली जो लास्ट प्रेजेंटेशन था उसमें हमारा कुछ मिस्टेक था एंड कुछ इंफॉर्मेशन कम थे, तो इस प्रेजेंटेशन में मैंने कुछ और ऐड किया है, तो एक बार आप लोग को मैं खुद बता दे रही हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे था तरुमित्रा इज अ एनजीओ, बट उसको हटा के यहाँ बायो रिजर्व वर्ड यूज हुआ है। देन सेकेंड वन इज मोटो हमारा वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने का था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स लाइक फोस्टर इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी। तो हम लोग इस चीज को बढ़ावा देते हैं एंड साथ में अपने मेंबर्स को एक स्किल्स देते हैं जिससे वो लोकल प्रॉब्लम्स को समझे और उस पर वर्क कर सके। एंड यहाँ पे भी वो बायो रिजर्व होगा, नॉट बायोस्फेयर रिजर्व। देन यहाँ पे ये चीज मेंशन है कि हमारे आश्रम में और हमारे कैंपस में टोटल 450 डिफरेंट स्पीसीज हैं ट्रीज और प्लांट्स के। देन बर्ड्स के 35 स्पीसीज हैं एंड कुछ स्पाइडर्स के भी हैं और साथ में गार्डन लिजार्ड के 12 स्पीसीज हैं।
आप सब में से कितनों ने वो स्टोरी पढ़ा है जो मैंने भेजा था ग्रुप में, स्टोरी ऑफ तरुमित्रा? एनीवन? बी रिस्पॉन्सिव एटलीस्ट प्लीज, यस नो। ओके, मैं शेयर कर दूंगी अभी उस चीज को भी। ओके शिल्पी। सो ये फादर रॉबर्ट एथिकल है। इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ ही तरुमित्रा को इनिशिएट किया था, फॉर्म किया था। तो उसका स्टोरी हम कुछ देर में देख लेंगे अभी। इनॉग्रेशन हुआ था बाय द स्टूडेंट्स। द स्लाइड वाज ओके। इसमें मेरा वेबसाइट का लिंक गलत था, तो वो चीज करेक्ट किया हुआ है अभी। अगर ये हम लोग बता रहे हैं ना कि वी रिसाइकल आर ग्रे वाटर, तो उसका पूरा प्रोसेस अगर समझा देंगे ना तो वो ज्यादा बेटर होगा। एंड इन दिस स्लाइड जब हम प्लांटेशन ड्राइव के बारे में बता रहे हैं तो एक्चुअली इसमें सिन्हा लाइब्रेरी का पिक्चर यूज नहीं है, तो ये चीज दिख नहीं रहा है कि वहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी जाके की है। सो इट्स बेटर नॉट टू यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड सिन्हा लाइब्रेरी। जस्ट ये कहना है कि प्लांटेशन ड्राइव किए थे एंड वी प्लांटेड 35 कचना ट्री। सो वो भी काफी है। देन मेनी ऑफ यू जस्ट प्रोनाउंस दिस पार्टली ट्री एज पाटिल ट्री, तो उस पे भी ध्यान रखना आप लोग। That's all, I guess. So next, Khushi, Yes, please continue. okay. So, hello everyone. I am Khushi and I am here to present a session conduct by Tarumitra. So, let me start with the logo. As we can see that the kid is hugging the tree, showing his love, affection and respect towards the environment. Next slide. So, do you know who are we? No. Uh, Let me tell you. Tarumitra is a bioreserve working for the betterment of the environment. It aims at spreading awareness regarding environmental protection and inviting interested volunteers to play an active role in the conservation of the environment. तो टैरोमेट्रा एक बायो रिजर्व है जो कि इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन के लिए काम करती है। इसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स और एक वी कैन से इंटर्न्स जो कि पार्ट लेते हैं एंड दे गिव देयर 100% बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। So here we come to the motto. What is the motto? Our motto is to foster ecological sensitivity and equipping its member with skills in handling local environmental problems. बेसिकली इसका मतलब है कि जो भी लोकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं इस वे में बताया जाए, लोगों को समझाया जाए ताकि वो इन चीजों को हैंडल कर सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अबाउट द आश्रम, Tarumitra is a bioreserve. The bioreserve is in the middle of the city. You can see in the picture, it is the board of Tarumitra Bioreserve while entering the ashram. जब आप लोग टैरोमेट्रा एंटर करोगे तो इसको आप वहाँ एंट्रेंस पे देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So it is the 10-acre patch of land in Tarumitra. We have nearly 450 species of trees and plants, 35 more than species of birds, few of spiders, and 12 of garden lizards. This 10 acres patch of land has varieties of plants and trees, as it is mentioned in the PPT here. Next slide, please. So this is Father Robert Ethical. You can see him here. He initiated Tarumitra with some group of school students.
जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, and he's also, you can also see him here. Next. Okay, so our Tarumitra was inaugurated in the year 2000. It was inaugurated by the students. As you can see in the picture, a girl student doing the stuffs like cutting the ribbon and all those stuffs. Next slide. Uh, so this is about the UN Conferred, a special कंजल्टेटिव स्टेटस ऑन टैरोमीट्रा. इसका मतलब है कि हम किसी भी यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपने आइडियाज एंड थॉट्स उनसे शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so this is our administrative building, which is called Uttarayan, as it is situated in the north side. That's why it's called Uttarayan. Next slide. ये पिक्चर उत्तरायण के अंदर के वॉल्स के हैं. Basically, it is a very energy efficient and open to nature. There is a 4-inch gap between the bricks, and that's why it tends to minimize the temperature in summer by 6 to 9%. बिल्डिंग के अंदर की जो टेम्परेचर है व्हेन कंपेयर टू द आउटसाइड टेम्परेचर, वो कम रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ द मेकिंग ऑफ द वॉल्स. इस तरीके से उन्हें कंस्ट्रक्ट किया गया है. सो वो समर के बीच में वो 6 to 9% कंपेरिजन टू द आउटसाइड टेम्परेचर कम रहती है. नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so the recycled floor. The tiles used to make this 6,000 square feet floor are of different sizes and shapes. Basically, ये जो फ्लोर है वो ऐसे टाइल्स को यूज करके बनाया गया है जो कि लगभग किसी भी काम में अब यूज नहीं हो सकते हैं. तो इस तरीके से इसे रिसाइकल्ड फ्लोर नेम किया गया है. नेक्स्ट स्लाइड. Our Tarumitra has solar panels too. We have 4 kilowatt of solar electricity produced by the solar panels. Next slide. Okay, so the grey water. We also recycle our grey or wastewater. So grey water refers to domestic wastewater generated in households or office buildings. हम इसको गार्डनिंग, फाउंटेन्स और फायर फाइटिंग में यूज कर सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Our Tarumitra organizes many activities. Some of them are mentioned here. So one of them is plantation drive. इस पिक में आप देख सकते हो कि there are many students, volunteers और interns जो कि actively पार्ट ले रहे हैं. तो ये जो प्लांट यहाँ प्लांटेशन की जा रही है इसका नाम कंचनार है. सो डू यू नो व्हाट इज इट कंचनार? No. Anybody? Yes or no? Okay. No. So Kanchnar is a state flower of Bihar. Till now, we have planted 35 Kanchnar plants in our Tarumitra. Next slide, please. Our next activity is Environment Day program. Basically, we can see in the picture that interns of Tarumitra are celebrating it on 5th June. So the interns of Tarumitra have made around 2,500 paper bags and have distributed the paper bags in Riga to the local shop vendors and promoting them to use it. Next slide, please. Okay, so this is also related to the Environment Day program. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो इंटर्न्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द पेपर बैग्स टू द लोकल शॉप वेंडर्स. एंड ये इंटर्न्स वो इंटर्न्स हैं जो कि यहाँ तरुमित्रा में उस दिन ऑफलाइन पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, बट देन ऑल्सो दे डिड देयर बेस्ट एंड अपने होम टाउन में इसको पार्टिसिपेट करते हुए लोकल शॉप वेंडर्स को ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट की हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Our next activity is Rakhi celebration. So as you can see in the picture that our Honorable CM Nitish Kumar is tying a Rakhi to a tree named Patli.
तो इसी शब्द से हमारे पटना का नाम पहले पाटलिपुत्रा रखा गया था। जैसा कि आप देख सकते हो कि आर सीएम नीतीश कुमार वो पाटलिपुत्री को राखी बांध रहे हैं एज ही गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस एक्टिविटी ऑफ Tarumitra, and so that's why he came and is celebrating it here. Next slide. Our next slide is named Ganga Cleanup Drive. Uh, the interns of Tarumitra have done 9 Ganga cleanup drives till now. So do you know what is the cleanup drive? Anyone? No. Let me tell you, it is an initiative taken by the government of India to address the pollution of the river Ganga by providing financial and technical assistance. इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टू रिड्यूस पॉल्यूशन और इंश्योर rejuvenation of the river Ganga. Next slide. Coming to the activity doing organic farming. So Tarumitra basically prefers doing organic farming rather than modern farming. जैसा कि हम जानते हैं मॉडर्न फार्मिंग से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है लाइक क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, soil degradation, etc. So likely Tarumitra prefers to do organic farming, and we can see in the picture that many school students have likely participated in it, and ये जो activity हो रही है वो Tarumitra के अंदर ही हो रही है. It is being held in Tarumitra itself, and this organic farming has done in the Tarumitra itself. Next slide. So here we come to our next activity, cloth pack painting competition with school students. So we can see here in this picture बहुत सारे school students हैं जो कि picture click करा रहे हैं अपने अपने certificates के साथ. So cloth bag painting competition में they really had their great time and fun, and they also enhanced their skills and knowledge regarding the environment protection context. Next. Okay, so here is the end of our session. Hope you enjoyed, and it was really a wonderful and engaging session with you all. Thank you all. Thank you, Kushi. Kajal, can you check Shagufe is in the meeting or not? नहीं, वो नहीं है. उसने मुझे मैसेज किया था कि उसकी दादी का तबीयत खराब है तो वो नहीं कर पाएगी ज्वाइन. Okay. How was I? It was good. Okay, I still have Sorry. किसी ने स्टोरी नहीं पढ़ा था क्या? वेट, मैं शेयर करती हूँ. Is there anyone जो पढ़ेगा इसको? Anjali, can you just read it? Yes. Go ahead. एक second. We began back in 1988 when very few people discussed environmental problems on a serious note. High school students from several schools came together under the banner of Leadership Training for Service (LTS), a students' leadership program. A Jesuit Father Robert Ethical addressed them on the growing menace of the ecological crisis. The students, under the leadership of Anindo Banerjee, a 9th class student from the local Loyola High School, decided to take out a rally
to spread awareness on the environmental problems. The director of LTS, Father Josh Kirakel, gave the necessary support and massive rally took off on 1 October 1998. The LTS students later sat down with Father Josh to evaluate the rally, and Anando suggested that they formed a separate forum to carry on the ecological campaigns. This was met with total support. Anando suggested the name Tarumitra, meaning Friends of Trees. The group organized a few programs in the same year, and Father Robert Ethical guided the students through a period of grouping for mooring, moorings and soul searching. The turning point. The Okay, newly that's born. all. Okay. You can assign someone else for the next. Krishangi. The turning point, the newly born Tarumitra, began with a few activities which included a 5-day workshop on how to paint trees, fruits, and flowers. Then Father Robert was transferred to Kodaikanal in South India and got disconnected with the group for a year. However, the turning point of Tarumitra occurred in April 1989. For Loyola High School boys, Anindo Banerjee, Vijay Mathur, Sanjay Pandey, and Jan Chatterjee decided to organize a cycle survey of North एक minute. North India from Patna to 1 minute. Patna to Delhi. On their way, they planned to meet the ordinary people in the villages and gather first-hand information about the condition of the environment in North India. With the blessing of the Cyclist Association of Patna, they set out to Delhi via Jaipur and parts of Himachal Pradesh. On reaching Delhi, they presented their findings to Dr. Shankar Dayal Sharma and then Vice President of India, who guaranteed them an hour-long audience. While on their way back, they halted at Agra because Jan fell ill, probably due to strenuous cycling. Aninodo, Vijay and Sanjay rushed him. अरे, किधर चला गया? Wait, एक minute. Okay, yeah, you can. Hey, what's going on? Yeah, now you can read. 1 minute. कहाँ थे? हाँ, rushed him to the hospital, but it was too late. The doctor Sorry for the interruption. Can I know what is this? Like ये क्या पढ़ रहे हैं आप? It was back story of Tarumitra, like start कैसे हुआ, तो सर ने ये अच्छा वो भेजा था that हमारे PDF ग्रुप that में. sir has shared in the group. या तो ये Yeah, चीज हम okay. लोग प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं, कुछ पार्ट्स इसके. Yeah, okay, nice. Continue please. Actually मैंने अभी तुरंत ही स्क्रीन ओपन किया, अचानक ऊपर नीचे वाला देख पाया. Okay. But it was too late. The doctors declared Jan dead on 22 April 1989. Jan's untimely demise shocked not only his parents, who had lost their only son, but also all the members of Tarumitra, LTS, and those associated with them. After they recovered from the shock, Jan's companions in Tarumitra made it their scared duty to tell other of the honest commitment of their comrade, his willingness to undertake and
arduous journey in order to tell others to protect the earth, and the supreme sacrifice of his life has provided a soul for Tarumitra. Since then, Tarumitra has grew around his sacrifice. In fact, Tarumitra named the first environmental painting competition after Master Jan Chatterjee. ओके दैट्स ऑल। सो ये वाला जो स्टोरी था ना, और वो जो एक स्लाइड था प्रेजेंटेशन में जहाँ फादर का पिक्चर था और साथ में कुछ स्टूडेंट का, तो आप यहाँ वहां पे ये स्टोरी को ऐड कर सकते हो, लाइक हाउ तरुमित्रा कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इट वाज द एफर्ट ऑफ सम स्टूडेंट and mainly Anindo Banerjee, who was from Loyola High School, class 9 student. Okay, Okay. कोई इश्यू? सो ये पूरा पीडीएफ आप लोग एक बार पढ़ लेना, इसमें बहुत सारा डिटेल्स है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो, लाइक कैंपेन्स भी बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, वो चीज आप यूज कर सकते हो प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। रेस्ट मैंने एक और पीडीएफ भेजा था ग्रुप में असाइनमेंट वाला, कोई वर्क कर रहा है उस पे? हाँ। हाँ, शुरू तो किया है। सो वो चीज कल लेके आना है सबको। ओके। Okay. वेयर आर अदर्स? पलक, यस, Yeah, we will वो bring it tomorrow. बोलो काजल। वो हम लोग पूछ लेते हैं ना कि अभी तक कौन कौन किस स्कूल को अप्रोच किया है, मतलब कोई एग्जैक्टली, कोई हाँ किसी हाँ। स्कूल में गया है कि नहीं। और वो लेटर का क्या हुआ? लेटर का आई गेस मिल जाएगा मंडे या ट्यूसडे तक, सर ने दिया था किसी को वो लिखने के लिए। मंजी, डू यू हैव एनी आइडिया लाइक क्या नेम था उसका? Sorry, whom? वो लेटर का जो था, लेटर लिखने के लिए सर ने जिसको दिया था, बिकॉज स्कूल No, पे I अप्रोच don't करना है तो remember. पहले लेटर ही चाहिए। Yeah, of course. No one can contact without letter. एग्जैक्टली। एंड वन मोर क्वेश्चन, लाइक अगर मैं अपने स्कूल में जा रही हूँ और कंटिन्यू कर रही हूँ इस चीज को, सो कौन इंटरेस्टेड होगा मेरी स्कूल को कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज वो बाईपास में है, तो एनी वन ऑफ यू, या फिर इफ यू नीड एनी हेल्प कुछ कोई और स्कूल को अप्रोच करने में। Palak, can you just tell them the exact location so that they can have the figure in the mind that how far they need to go? ओके ओके। सो आई वाज इन कृष्णा निकेतन, ये बाईपास रोड में, ट्रांसपोर्ट नगर। जोया, शिल्पी, सदा, माइक ऑन कर लो एक बार तो एटलीस्ट। यस। तुमने किसी स्कूल में अप्रोच किया? फिलहाल तो नहीं किए हैं। So, मेरे घर के जस्ट नीचे एक स्कूल है, बट उसमें स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं है। लाइक किस टाइप का, ये 5 टू स्टैंडर्ड 6 टू हाँ, 8 के नहीं, बच्चे हैं 6 ना? to 8 नहीं है, मतलब 1 to 5 या 6 तक, बस उससे ज्यादा नहीं। देन उस चीज का फायदा नहीं, किसी और स्कूल में अप्रोच करना पड़ेगा। अच्छा। सो न्यू इंटर्न्स को ये तो पता है ना लाइक एग्जैक्टली है क्या ये कैंपेन? कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको अभी तक नहीं पता? It's going to be a month now. एग्जैक्टली, बट And देयर आर न्यू people, इंटर्न्स स्टिल, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, किसी को अभी भी डाउट है तो। yeah, yeah, feel free to ask. क्योंकि इफ लास्ट यू वीक करना हाँ, उन्हें ही है, क्योंकि हम लोग तो अब 1-2 मंथ वीक में चले ही जाएंगे। इज देयर एनीथिंग एल्स जो डिस्कस करना है? प्रेजेंटेशन वर्क इज डन। देन कुछ चीजें हैं जिस पे वर्क करनी पड़ेगी, एंड समटाइम्स इट्स लाइक ना कि हम लोग बस उस चीज को पढ़ रहे हैं, बट वो खुद में ही इंटरेक्टिव करना पड़ेगा उस चीज को, वे ऑफ टॉकिंग से ही।
Is your everything completed, like the presentation and reward for today's meeting? हाँ, मैंने लास्टली सर को तो भेजा अभी ग्रुप में, लास्ट वो अप्रूव कर देंगे तो मैं मेन ग्रुप में No, no, सेंड कर I not about the designing. I was asking about the presenting from your team ओनली member. वन गर्ल इज लेफ्ट, उसने अब तक लाइक मीटिंग भी उसने आज ज्वाइन नहीं किया है. आई टेक्स्टेड हर बट उसका कुछ पर्सनल इश्यूज है. Okay. आई विल सजेस्ट कि जितने लोग भी मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना, उनसे बार कांटेक्ट कीजिए और उनका एक लिस्ट बनाइए कि वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, उनका प्रॉब्लम क्या है. ओके. सो या And वन. हाँ, yeah, please continue. आई वाज सेइंग कि अगर आप मीटिंग में हो तो एटलीस्ट कुछ बोलो तो सही. मंजीत, यू कैन कंटिन्यू. Manjeet, you can continue. Yeah, just a second. There is a food in my mouth. Yeah, so I was telling that I haven't saw the many presenting there, but I saw some of them. But what I observed that people are reading it, and they Exactly, are not. that's what I said in the beginning. Yeah, see, I have some suggestions. Like if you want to consider it, you can. Okay. Like how many of you watched the Three Idiot movie? I See, watched. this is the normal conversation, so you can relax. No need to mm, develop a temperament that they are asking some questions. So please, you can come up with your speak and please unmute yourself and say something. Even if you can't participate in casual talks, then I don't think then how you're going to continue this bench. So yeah, I'm just having some casual talk for suggesting you something. So how many of you watched that Three Idiot movie? So no, not Three Idiot. Wait. I forgot the name. Yeah, Tare Zameen Par. How many of you watched that movie? Okay, मैंने देखा है. Yeah, I also मैंने watched. भी. मैंने भी देखा है. Yeah. So did you remember that teacher that Amir Khan was the hero, right? Yes. Yes. Yeah, he's performing as a teacher of the school. Do you remember him? Yes. Yes. Yeah. So you need to be like somewhat like him if you want to want that students listen to you, students care for you, students respect you. Then you need to be like him. आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो या किसी को समझा रहे हो तो बच्चे आपसे बोर हो जाए, आपको मतलब ये सुनना बंद कर दें. तो आप ये फिगर आउट भी आप ही को करना होगा कि आप वो जो चीज आप किसी को समझाना चाह रहे हो, नॉट ओनली चिल्ड्रंस, इफ यू आर एनीवन, लाइक आप किसी को कहीं भी प्रेजेंट कर रहे हो तो हाउ यू गेन देयर अटेंशन. हर एज ग्रुप की अटेंशन गेन करने की एक अलग प्रोसेस होती है. If you are going with the children, then you need to entertain them with the presentation. Like you put some game, you ask them some funny questions, you crack some jokes, like something like that in the middle. So that's how you got the attention of the children, like the 4 or 5 class students. That I'm not very much experienced by this, but one thing I know that they are a very little children. Not so many of them are aware of these things and they care about these things. Of course, they are child. उनको खुद क्या करना उनको यही नहीं पता होता है कि एनवायरनमेंट के बारे में क्या केयर करें. तो आप कुछ ऐसे टॉपिक्स को उनके सामने शो
शो कर रहे हो जो उनके बारे में उतना ज्यादा उनको पता नहीं या फिर उतना केयर नहीं करते, तो यू नीड टू मेक दैट एज मच एज इंटरेस्टिंग दैट यू कैन, करेक्ट? Yes. Yeah, so think like children, like 5 year children. कि आप अगर आप वहां पर क्या कर सकते हो, इफ यू हैव सम ब्रदर एंड सिस्टर, लाइक छोटे बच्चे आपके घर में हो, तो यू कैन टॉक विद देम। अगर आप छोटे बच्चे से कभी मिलते हो तो उनसे कैसे बात करते हो, थिंक अबाउट दैट। एंड देन डिजाइन योर प्रेजेंटेशन, नॉट इन डिजाइन, आप अपने जो खुद को जो प्रेजेंट करो, जो बोल रहे हो उसको उस तरह से बोलो कि आपको लगा कि आप किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हो, नॉट टॉकिंग टू द एनी लाइक एडल्ट पर्सन। लाइक मैंने काफी वो देखा, दे they present in the English language. Of course, in the many schools, the English language they made the compulsory. But of course, अगर आप बच्चे currently in the Bihar, if you in any school, अगर आप बच्चों से इस लैंग्वेज में बात करिएगा, like in English, I'm not telling that you always you have to talk in Hindi, but like figure out in some middle, like कुछ इंग्लिश और हिंदी का कुछ मिक्सचर करके, ऐसा कुछ करके आप अगर कुछ करते हो ना, तो उन्हें वो समझ में भी आएगा उन्हें, और वो थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा इससे, करेक्ट? या करेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज दैट यू यूज ऑन योर व्हाट्सएप चैट, मैसेज करते हैं, तो ट्राई टू एग्जैक्टली। और अगर कुछ हैवी वर्ड है तो उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दो नॉर्मल लैंग्वेजेस में। या करेक्ट करेक्ट। एंड वन मोर थिंग, अगर लाइक आप प्रेजेंट कर रहे थे ना, तो कितनों का नेटवर्क इश्यूज हो रहा है या फिर माइक प्रॉपर्ली नहीं है, तो उस चीज पे भी वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं कि एट द टाइम जब सेशन हो रहा है उस बीच ये इश्यूज आने लगे। या दैट्स द मेन पॉइंट, अगर बीच में वैसा खराबी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। So only those person going to present that they have confirmed that they will not have the internet issue. Of course, if some sudden thing comes, that's a different problem. और कुछ सडन आपके पास आता है, आप सब कुछ अपने तरफ से रेडी रखते हो, पर सडनली कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मेक श्योर दैट कि आपके आपके तरफ से हर चीज ओके रहे। या सो सबने समझ लिया इस चीज को? Yes. Yes. By the way, how many of you know about the thing that is going on very viral on the internet nowadays, called the Chat GPT? आई नो। I know. Anyone Yes, else? I know. Yes. Do you guys use it? यस समटाइम्स। I have used it. Yeah, we prefer many times to use. Actually, if you use it properly ना, then जो कैंपेन हम इतने दिनों से डिजाइन करते हैं ना, वो उसमें 1 घंटे के अंदर डिजाइन हो सकती है टोटल कैंपेन। तो मैंने स्टार्टिंग में इसलिए थोड़ा हिंट्स दिया था, आई वाज नॉट, मैंने चाहा था कि आप पूरी तरह से उसमें रिलेवेंट हो गए, इसलिए मैं स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा नहीं बताया था उसके बारे में। एक्चुअली दैट चैट जीपीटी हैज सम प्रॉम्प्ट सैम्पलिंग। अगर आपको सही प्रॉम्प्ट दोगे, देन दे कैन गिव यू द बेस्ट और बेस्ट आंसर। So I will suggest you can go through that things, go and figure out that how you can do it. You can search on the YouTube also, like how to prompt ChatGPT and AI thing. You will get the bundles of the videos, more than the lakhs of videos they are uploaded there. You can figure out those things. द थिंग इज ना कि वी हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज, बट उस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना और खुद पे वर्क करना है, वहीं पे हम लोग वो लैग कर जाते हैं। For your kind information, you can ask these things also. Actually, पिछले कुछ मंथ्स में जितने भी कैंपेन और जितने भी स्टेप्स आपको ग्रुप पे दिखे हैं, मैंने मेरे और सर के थ्रू, वो सारे चैट जीपीटी के दिया क्रिएट किया हुआ है। We don't really expend so much time on this thing. We just go and write the prompt, and then they give the whole plan.
Even if you ask them to how to survive your life, they will give you the bundle of examples. You can go and figure out those things. That's a very good and very much experimental thing. Go and check it out. Maybe that can help you in the future work. Maybe that ChatGPT will maybe help you in the presenting you also, like those who are presenting here the presentation. If you have asked the ChatGPT that give me the idea how I can impress students to work with me, like that, they will give you the bundles of ideas. Like uh, I'm telling you that you can go through that and you can get the. Of course, they will give you many ideas. The best part is you can prompt them in any language, in English, Hindi. They will answer you in each and every language. That's a good part. There is no language foundation that you can only put only English, only something like that. You can ask them in Hindi also and in English also, like that language you used to in chat on WhatsApp. You can use that language also. That AI will answer in the same language in English only. So that's the most easiest part that they have made. Yeah, that's it. सो सबको एक बार इस चीज को जाके देख लेना. एंड काजल, वन मोर थिंग, तुमने वो जो वीडियो का बताया था, कैन यू जस्ट शेयर दैट आइडिया? वो स्टोरी वाला हाँ हाँ, स्टोरी वाली. स्टोरी बताए ना, वो स्टोरी, इस स्टोरी में मतलब लाइक दो शॉर्ट में बता दो प्रॉपर करना क्या है और कैसे करना है, वो चीज बता दो ओवरऑल. हाँ, तो स्टोरी तो आप लोग को पता ही है कि उस स्टोरी में दो लड़की जो है वो सब बात कर रही है प्लास्टिक के डिमेरिट्स में, डिमेरिट्स को बात कर रही है। तो उस स्टोरी में हम लोग वीडियो बनाना चाहते हैं। तो पिक्चर्स तो पलक हम तुमको भेजे थे ना, आधा पिक्चर्स तुम देख लेना कैसे निकालना है। ओके. और फिर वॉइस ओवर करना है। तो उसमें 3 कैरेक्टर है, तो आई थिंक हमें 3 किसी का कोई कर सकता है जिसका मतलब वॉइस थोड़ा अच्छा हो। मैं तो नहीं करूंगी। सो कोई है जो इंटरेस्टेड हो इस चीज में? लाइक एक नैरेटर का होगा, देन 2 गर्ल्स का टॉक है, 2 तो है और फिर Something सब like the वीडियो short एडिट film कर that सकता है अच्छे से। और इट्स नॉट शॉर्ट फिल्म, लाइक काइंड ऑफ एनिमेटेड, कुछ वैसा क्रिएट करना चाह रही है ये, कि 2 लड़कियों का कन्वर्सेशन है. एंड इट्स लाइक कि एक के लाइक फैमिली के साथ वो विलेज एरिया में जाती है घूमने के लिए. एंड शी जस्ट सॉ ना कि कुछ बच्चे वहां पे कुछ जला रहे होते हैं, एंड उससे धुआं निकल रहा है ब्लैक कलर का. तो वो वहां जाती है एंड वो पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो ये. तो वहां से एक बच्ची उठती है और वो बताती है कि हम लोग प्लास्टिक जला रहे हैं, ऐसे ही खेल खेल में. तो वहां से वो कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है प्लास्टिक का. तो फिर वो अपने बारे, अपने घर के एरिया में बताती है जो सिटी में रहती थी, कि कैसे प्लास्टिक से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, कैसे फिर वहां से वो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा इको ब्रिक्स का, और कैसे उस चीज को हेल्प करता है. उसके स्कूल ने ये सिखाया कि हम लोग प्लास्टिक को इस वे में कलेक्ट कर सकते हैं. सो बस वही था, उस चीज को ये रिप्रेजेंट वीडियो के थ्रू करना चाहते हैं कि एक वॉइस ओवर कर दे तो स्टूडेंट्स को समझ में आएगा वैसा, नॉर्मल लैंग्वेज में. nice idea. वही प्रेजेंटेशन के पीछे हम लोग वीडियो भी दिखा दे तो उन लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। But who will do the animation? Who is the animator in between us? एनिमेशन इज टू डिफिकल्ट, तो हमने सोचा ना कि पिक्चर्स मिल जाए ना, स्टोरी बेस्ड वैसा पिक्चर्स यूज करके ही डाल दें. Hmm. But you पिक्चर्स don't तो think that मिला है। picture will be a little bit odd, I think? इट विल बी, बट एनिमेशन किसी को नहीं आता है. Yeah, that's also true. सो किसी और के पास कोई आइडिया है इससे रिलेटेड, लाइक कैसे इस वीडियो को प्रेजेंट कर सकते हैं या बना सकते हैं? Can someone do the physical acting like thing? Because I think if you are talking, the only talking thing, then you can do it easily like physical acting. But that's और not the big thing. You can do on या the फिर Tarumitra हम only. लोग ना किसी बच्चे से ये चीज करवा सकते हैं, क्योंकि बड़े लोग करेंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों पे, बट बच्चे Yeah, से ही of दिखा course, के. of हाँ. course. So you can bring any of if someone have their
siblings brother and and all. sister, siblings here. They can bring them in Tarumitra and start the acting part if they can. Like yeah, you can figure out this thing. Yeah, like by the way, Okay, the okay. idea was good. So our plan was like this कि पहले तरुमित्रा का जब इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा ना, फिर ये वीडियो दिखाएंगे और फिर कैंपेन के बारे में उन्हें बताएंगे. I don't think that we have that much time कि ऐसा वीडियो क्रिएट हो जाए उस टाइम स्पेंड because this need a time. Because हमारे previous शॉर्ट फिल्म था that फर्स्ट उसकी तरह तो नहीं बनानी, उसके तरह टाइम भी नहीं लेनी है, but that's also need a minimum like 1 month time. क्योंकि आपको 1 से 2 वीक तो आपको like in acting, recording, choreography में ही जाएगी आपकी. Then minimum 1-2 weeks for the editing. Then it will be final. I'm Okay. telling this from my experience. If you could do better, you can. Okay, we'll work on it. like और कोई इसका easy solution मिलता है तो. Yeah, actually, I have some easy solution also for the animation part. I will share some AI website link with you. They create the 3D person model, not a real person, but animated type person, cartoonist type person. You can use them for your conversation. So it will create like whole story kind of thing. No, whatever text you will give them, they will create that Okay. in a animation with a person, Okay, in a understood. cartoonist person. Like you type any simple word, like the sentence, and then that AI will take the sentence and convert it to a video where your text will be the voiceover, and there will animation will be going on with a cartoonist person. इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आई गेस. Yeah, no, it's not. So it's maximum it can take 10 to 15 minutes. तो आप मुझे वो चीज़ शेयर कर देना ना आज. Yeah, I will need to search it. मैं भूल गया website. Yeah, I will share it. ओके, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे. किसी को कोई डाउट है या कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड? हाँ, मुझे एक असाइनमेंट से रिलेटेड पूछना है. कौन सा? वो असाइनमेंट में एक पेज में इको ब्रेक मेजरमेंट लिखा हुआ है, उसमें क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है. इट वाज लाइक ना कि जब हम स्कूल्स के पास ये जो पेज जाता तो वहां से जो या तो टीचर्स या फिर मॉनिटर्स जो भी होते वो बच्चों से जब इको ब्रेक्स कलेक्ट करते ना तो उसका डिटेल्स लिखते, किस बच्चे ने कितना दिया और उसका वेट क्या है. सो अगर तुमने क्रिएट किया है और तुम उसका मेजर कर सकती हो देन गो अहेड, यू कैन फिल द फॉर्म देयर. ओके. एनीवन एल्स? ऑनलाइन में बच्चे के साथ कौन सा एक्टिविटी कराएंगे? फिलहाल सेशन 1 का तो आई गेस ऑनलाइन ही होगा. देन पहले तो ऑनलाइन ही है, उसके बाद ही ना ऑफलाइन होगा. अर्ली बर्ड वाला एक्टिविटी था वो तो ऑफलाइन बेस्ड ही है, तो वो चीज चेक करना पड़ेगा सेशन बाय सेशन. अच्छा, तो ये जो स्कूल का प्रेजेंटेशन था वो तो ऑनलाइन ही है ना? हाँ, फर्स्ट सेशन तो फुल ऑनलाइन ही जाएगा. ओके. और कोई क्वेश्चन? नो. सो एवरीवन आर कमिंग टुमारो राइट? यस. Yes. Hopefully so. Can you just raise your hand? How many of you are coming tomorrow? Anya, Krishangi. Anna is also coming. Right now, it might be this is not here. Okay, she raised her hand. सो जो भी आ रहे हैं अपना असाइनमेंट प्लस साथ में अगर आप लोग इको ब्रेक्स बना रहे हो तो उसको लेके आना. ओके. And what about you, Priyanshu Jha and Sadafnaz? Priyanshu texted me, he is not active, so
Like Not active means not active means he is out, so he can't. at least we can erase her. Erase her. Sorry. Hand, raise hand. Erase her. Pranjal, if you're Priyanshu, listening, Sadaf. you can raise your hand if you can't speak. And Sadaf also. I think Sadaf was present in all the previous meetings because I saw her pictures already. Yes, she was active. But she was not so active in online meetings. Yeah, that's not any medicine. So कल का टाइमिंग 9 o'clock है ना? एंड मंजीत वन मोर थिंग, लास्ट संडे यही डिस्कस हुआ था कि हम लोग इस बार मड पेंटिंग करने वाले, तो सर ने उसका कुछ बताया नहीं अब तक. No, I don't think that mud painting will happen. ओके. Tomorrow we will discuss about the campaign one. ओके ओके. And maybe if I will be well, then maybe I will also. सो यू आर कमिंग टुमारो? Not 100% sure, but if अगर तबीयत ठीक रही तो मैं आ जाऊँ. ओके. ये सान्या 9 बजे का ही टाइमिंग है. Yeah. So that's all. I guess we can end the meeting now. Yes. Yep. Mm. If you want, Surely we you are can. the host. Yes. Okay, so good night.